हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा सेकेंड वीडियो जो कि अगस्त के ये लास्ट वीक का करंट अफेयर्स है। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि वो इस तरीके से लाइक टोमेटो फ्लू एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी होगी इंडिया की। दैन एसएसए ऑब्जर्वेटरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नैनो यूरिया अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Drought in Europe is important, and Nishchay Poshan Yojana, which is regarding TB, means tuberculosis. So let's see all of these topics one by one. These topics are important for this second video. This actually a video is the second video of this series, which covers the current affairs of the last week of August month. So let's go to the first topic, which is tomato flu. This tomato flu is recently has been noted in Kerala and other states also, but it came to the news in Kerala first, and it actually targets the children under 5 years of age. Actually, it targets other people of other ages also, but actually the immune system in the older people are stronger than that in the children. That's why the children are at the receiving end of this virus, tomato flu. So what is tomato flu? First of all, we need to understand what is tomato flu. It is named tomato flu because the blister that appears on your skin when you are infected with this virus is that is of pink color, which is quite close to the color of tomato. And when they grow, when you reach the latter stage of your infection, then the size of that blister turns into the size of a tomato. So that's why this is called tomato flu. The virus that causes this is called Coxsackie virus, which is A16. So this name you need to remember. This is a quite tongue twister. Coxsackie virus A16, right? It belongs to the enterovirus family, which also causes other diseases like this also causes other diseases like chikungunya. This virus is quite close to the virus which causes chikungunya. That's why they are quite closer. And okay, so human are the only host for this virus, which means no, this virus will not affect any animal. So this is important something here. Then transmission, if we talk about this, whether this is contagious or not, so this is highly contagious. Human to human transmission is quite possible, but the older people means not people who are those who are of more than 5 years of age are at less risk, but children are at the higher risk. So then comes the symptoms. Agar symptoms ki baat kare to the primary symptoms observed in children with tomato flu are like those of chikungunya, which means high fever, rashes, intense pain in joints. These are the symptoms of chikungunya too, and that's why this virus is quite close to the virus that causes chikungunya. Treatment, if we talk about the treatment, there is no specific drug for this virus, right? So the treatment for tomato flu is similar to that of the treatment of chikungunya, dengue, and hand, foot, and mouth disease. The patients are advised to isolate, rest plenty of food, and hot water sponge for the relief of irritation and rashes. So the important thing is that if there is no drug for this, no specific drug for this, and symptoms are quite similar to that of the chikungunya. And the tomato virus is caused by this virus, Coxsackie virus A16, and it affects only children who are under 5 years of age, right? So these are the important things about this tomato virus. Next, moving to the next topic, which is central bank digital currency. This is important because we see in the near future, we see the blockchain is the future, right? And blockchain will obviously dominate the future currency, not future currency, then at least future transaction of money. It will be the blockchain, will be based on blockchain, not blockchain. Blockchain is the technology, and currencies which follow the blockchain are cryptocurrencies. Cryptocurrencies are different from those digital currency because cryptocurrency do not have any regulatory body over them, right?
And the digital currency, central bank digital currency, CBDC, is a common name for all those currencies which are being controlled by central banks of the respective countries. Like India will have e-rupee, as the finance minister has said in the recent last budget, that India will have its own digital currency, and RBI will monitor this. Actually, this digital currency is the digital form of the rupee that we already use in our day-to-day life, right? So this is how this digital currency is. So something about digital currency we'll see here, and I would like to tell you also that in the future, many in current time also, many countries are using this digital currency, and in future also many more countries will be using this digital currency. So the first state here is Bahamas is the first state that used its digital currency, which is called sand dollar. This is the digital currency of Bahamas, and Bahamas is the first country. 10 more other countries, major countries are there which uses digital currency, and China is one of them. China is actually using it as a pilot project, and China is the only major country that is trying to or thinking of using this digital currency in near future. So let's see something about a few things about this. So digital currency is actually being controlled by central bank, and that's why it is called central bank digital currency, right? So RBI is thinking of using this digital currency, digital rupee, right? So, and the thing is that this digital rupee will not be used for, will not be for the general public. It will be used for wholesale transaction, wholesale business, means the bigger business, they will use this currency, because that will also reduce, actually this digital currency reduces the cost of printing money and handling the cash, because the printing and handling cash incurs a lot of cost, and if we use the digital currency, so that cost will be minimized, and only cost that will be needed, that will be incurred, is in maintaining the infrastructure, the technology, and updating the technology as time passes, because technology is improving day by day. And if we are going to use digital currency, then technologically we have to be quite updated, so that any cyber attack does not happen, and privacy breaches do not happen. So for this thing, we'll see everything in there. For this, to release the digital currency, RBI has amended RBI Act 1934, right? So this is important. RBI Act. RBI is actually it's a statutory body which works under this Act, RBI Act 1934, right? So this I have just mentioned, that CBDC means digital form of paper currency, and unlike cryptocurrencies, see, there is the difference that cryptocurrencies and the digital currency that we are going to use, there's a difference, that cryptocurrency is not being monitored, but digital currencies will be monitored by RBI. But the similarity is that this digital currency will work on the same technology on which cryptocurrencies work, which is blockchain, right? So it is the same as fiat currency, which is the notes that you see every day, right? So these are some of the things. Digital fiat currency or CBDC can be transacted using wallet backed by blockchain. Yes, say this you already must be using this wallets in Paytm and Google Pay and Phone Pay, and many other things are there. Many wallets are there, Amazon Pay, many wallets are there in market. So this digital currency will also be used the same way, and that wallet will be maintained and backed by the blockchain technology, right? So the next thing is objective is why do we want to use digital currency? The first thing is the trim cost in handling physical currency, because physical currency needs replacement after wear and tear, and this also needs to be transported from different places, like from banks to ATMs and from one bank to another bank, because cash has to be transported to be distributed in the market. So that cost can also be cut down. That's why this digital currency will have an upper hand while using. So these are the
some of the benefits of using digital currency. Then global trend, I have just mentioned that Bahamas has been the first economy to launch its nationwide CBDC, so which is central bank digital currency. Nigeria is another country. Nigeria is actually the only country from Africa which uses digital currency, and its name is e-Naira, right? Then China has become world's first major economy to pilot digital currency eCNY, the Chinese digital currency. Then Korea, Sweden, Jamaica, Ukraine are other countries which are using and may use digital currency in near future. The benefits are combination of traditional and innovative. Traditional because we are not shifting the currency per se, but we are using it in a digital format, so that's why it is traditional and innovative. CBDC can gradually bring a cultural shift towards virtual currency by reducing currency handling cost. This I have just mentioned. CBDC is envisaged to bring the best of both worlds. This is all common sense. Then easier cross-border payments. Yes, this is important. This is one of the points in the benefits of using digital currency, because when you use digital currency in a cross-border payment, you need to maintain banks across border. Like if you are if India purchases oil from Russia, then there has to be a bank in Russia and there has to be a bank in India. We will deposit money in the Indian bank, and Indian bank will deposit the money in the Russian rumi. It's not rumi. Russian currency. Sorry, I forgot the name. I think it's rumi. Ruble. Sorry, ruble. Indian bank will deposit that money in the Russian bank, and Russian bank will then transfer the money in the company from which we are purchasing the oil. So this is how it happens. But when we use digital currency, we can directly transfer money from one person to the second person or the next person without using any banking or without having to maintain any banking system. So this will also cut down the cost of maintaining currencies, right? Then push the informal. Yes, it's also financial inclusion and tax integration, because a lot of, if currencies are being used in digital format, a lot of informal economy will become a part of the formal economy, because they will use the digital format of currency, and while using digital currency, they will be integrated in the mainstream economic system or taxation system. You can understand this way. Challenges, privacy concern, obviously, because RBI will have to maintain and store and safeguard a lot of data from of its users, right? So privacy is one of the concern. Then compromise of credentials is another major issue, obviously, because if I as a consumer, if I am using digital currency, then all the data will be stored by the RBI or any third party. So this will also be a cause of concern if any cyber attack happens. Then higher cost of upgradation. Obviously, technology is being upgraded every day. Every day new technology is coming up, and cyber attacks are also, cyber attackers, they are unethical hackers. They are also updating their system. So we as this infrastructure holder like RBI will have to maintain a lot more, will have to invest a lot of money on upgradation. So higher cost of upgradation is involved there. So these are about the digital currency. Then the next topic is India's first commercial SSA observatory. This is important because first time India is going to have its own SSA observatory. India's first commercial space situational awareness. This is the full form of SSA, which means space situational awareness. Means you will have the awareness of what's happening in the space. Means India will have the awareness of what's happening in the space. Observatory, it will be set up in Garhwal region of Uttarakhand, which is very important. You need to keep this thing in mind. Then observatory will be set up by Digantar, a Bengaluru based startup, and something about this observatory, it will be strategically positioned to serve global space traffic management and operations. So this is actually this setup, this observatory will observe all the happenings in the space, traffic or meteorites or anything
happening in the space, it will be monitored by SSA. It will assist in tracking any activity in space, including that of space debris and military satellites hovering over the region. So anything that is happening overhead us, over our head, so that will be being monitored by this SSA observatory, right? At present, this is important. US is a dominant player in the monitoring space debris. The observatory will bring value to nation by serving as a essential data source for advancing knowledge for the realm of space. Obviously, if we have this observatory in function, so we'll have an upper hand over other countries in our neighborhood. And obviously, if we have to dominate, like India has become the 5th largest economy, and India has surpassed UK. So in near future, in the IMF, if we go by the IMF predictions, by 2025 India will become, or by 2030, India will become the 3rd largest economy. So if we see ourselves going in that path, that way, we need to be upgraded, or we need to have a very robust infrastructure in every field, like space, military, economy, or production, manufacturing, everything, or maybe maintaining or skilling our population, that we have just seen that Gramin Udyami project. So all these things are will help in achieving this goal of being third largest economy in the world. So that's why these things are important, right? So India's current scenario regarding SSA situation refers to keeping track of objects of this. I've just mentioned that space situational awareness refers to keeping track of objects in orbit and predicting where they will be at any given time. So obviously, if we have a satellite in space, and any space debris is going to hit our installation in space, so this observatory will keep a track of that debris and our installation, our vital installation in space, and we can save our installation from being hit by those meteorite or any space debris. So it will be a wonderful thing for India. At present, India uses multi-object tracking radar at Sriharikota range, Andhra Pradesh, but it has a limited range. We already have this system, multi-object tracking radar, but it has a limited range, right? So, and India also depends on NORAD, means North American Aerospace Defense Command, for further data, but we cannot depend on USA, because geopolitics, anytime anything can happen. And like in Kargil, during Kargil war, USA denied to give us the data about GPS data regarding the Pakistani army or their installation. So that's why we cannot depend on a country like USA. That's why we need to have our own system, right? So the nodal agency, obviously ISRO, will have the control of this observatory. And other thing, related initiatives like Project Netra. We already have this Project Netra. Project Netra will be an early warning system in space to detect space debris and other hazards to Indian satellites. We already have Project Netra. And once operational, it will give India its own capability in space situational awareness like other space powers. Under this project, space debris tracking radar. So all these things we have just seen. Then clear space, this is important. This is the space observatory that we are going to have. The same thing European Space Agency has, and it is called clear space. At global level, the significance of the European Space Agency scheduled to launch in 2025 will be the first space mission to eliminate debris from the orbit. So this clear space from the European Space Agency will go into the space in 2025, and it will clear the space debris, which is going to be the first time in history. We are going to clear the space debris. So clear space is going to do that, and that's why it is important. You need to keep this thing in mind. Then what is the significance of this upcoming SSA observatory? Reduce collision rates, because I have just mentioned that any space debris, since last 50 or years or so, we have been sending, or the whole world has been sending a lot of satellites into the space. But when the satellites run out of their life,
they remain there, they stay there. We do not bring those satellites once they are once they are out of their use. So all those satellites or anything they keep on moving in the space, but when we send a new satellite, the chances of the collision with those older satellites is quite high. So that's why if we have an observatory, we can save our new satellites. And I have just mentioned that clear space will remove the space debris from the space. So that is how we are going to reduce the collision rates. The resolution of this observatory is 10 centimeter in size. Means even a 10 centimeter small object can be detected by SSA observatory. This is something huge, right? Tracking and identifying pre-existing RSOs. So I mean, already the resident space objects that is already there in the space, we can track them, right? So with this space observatory, we can track them. So this is what resident space objects that is already in the space. Enhancing indigenous capabilities, which I have just mentioned, and supplement global networks. Obviously, when we have this setup, we can share it with other countries, and we can earn a lot of money. So that will be good for India, right? So this is how this topic is, right? And Australia, the data gap has been witnessed due to so let's have a recap. The Space Observatory will come up in Garhwal region in the Uttarakhand state. Digantar is the startup which Bangalore based will set up this, which is in work with that, which will set up this observatory. Then it will be strategically positioned to serve global space traffic management. It will have a traffic management system there. Then one thing is that the objectives I have just mentioned, that it will have a track of objects in the orbit, predicting where they will be at any given time. So this is the main objective of this observatory. Then India's capability is that we already have a multi-object tracking radar, which is important. You need to keep this thing in mind, which is in Sriharikota, but this setup has a limited range. That's why we are going to install a new observatory, right? Then Clear Space 1, which is from the European Space Agency, which will start start removing the space debris from 2025, right? Then the resolution of this observatory is 10 centimeter in size. And so these were the important things about this topic. Let's move to the next topic. Then again, next is a self-sufficiency in urea, which is, I would say, very important, because urea is a very integral part and very important part of our agricultural system, agricultural practice, and whatever update comes regarding urea, we need to be aware of that. So India is going to be self-sufficient by 2025. India has decided to do that. And how will India do this? Through liquid nano urea. See what happens. We are dependent on imported urea because we need a lot of urea for our agricultural production, and almost half of that urea comes from the import, right? Comes through import. So that causes our exchequer. Foreign exchange. That causes us to we need to spend some foreign exchange for this import. That's why India has decided to introduce liquid nano urea. What is it? It is in the form of liquid, and it will have nanoparticles which will lead to the reduction of urea by 50%, almost 50%, right? So it is developed to replace conventional urea, and it can curtail the requirement of the same by at least 50%. Means if you are using conventional urea, which is in the form of small balls, so if we use that conventional urea and if we use a liquid nano urea, in the case of liquid nano urea, you will need 50% cost reduction, right? So this is what it says. Then it is developed by IFCO, which is Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. IFCO is a cooperative limited which has
which has introduced this liquid nano urea. The first liquid nano urea plant is inaugurated in Kalol, Gujarat. So these things are important. IFCO, Kalol, Gujarat, 50% cost reduction, and it will be in the form of nanoparticles, liquid nanoparticles. So these are important. What is the status of fertilizers in India? So India consumed about 500 liter metric ton of fertilizer, 500 lakh metric ton, I think it's lakh, per year in the last 10 years. Okay, this is not that important. Government has taken a number of measures to reduce urea consumption. One thing is important here. The government has taken a number of measures to reduce urea consumption. How? नीम कोटेड यूरिया, आप सब लोगों ने सुना होगा नीम कोटेड यूरिया. तो यूरिया कंजम्पशन में एक और चीज़ थी कि यूरिया जब इंपोर्ट होता था तो उसमें क्या इंपोर्टेड यूरिया को बहुत सारे लोग अदर पर्पस के लिए डाइवर्ट कर देते थे, ठीक है ना, या फिर ब्लैक मार्केट में चला जाता था. तो उसको कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया गया. और नीम कोटेड यूरिया से सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन रहती है और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत भी कम पड़ती है. और नीम कोटेड यूरिया को जो है सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है. सो ऑल दिस थिंग्स फॉर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ यूरिया, नीम कोटेड यूरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट. देन more than a fourth of the urea requirement was imported. In financial year 2021, more than a fourth, and 25%. Sorry, I mentioned in the starting of the video that we imported 50% of urea, which was wrong. I'm really sorry. It is only 25%. Around 25% urea is being imported. So this is wrong. This is right. So then need of large quantities of fertilizers. Obviously, we are highly dependent on agriculture. Agriculture is a big part of our economy. That's why we need a lot of urea, a lot of fertilizer, and that's why if we introduce liquid nano urea, that will be a good thing for our agriculture. Then 8 new nano urea plants, which are being centrally monitored, will start production by 2025. So these things are important. So the first thing is around 25% of our urea consumption is being imported. Then neem coated urea is to reduce the urea consumption. Then first liquid nano urea plant is being built in Kalol, Gujarat. Then IFCO has introduced this liquid nano urea, and if we use liquid nano urea, our 50% of cost will be we can save 50% of our urea cost on by using liquid nano urea, right. So the next topic is drought in Europe. So our next topic is drought in Europe, means यूरोप में सूखा आ गया है भाई, ठीक है. तो उसके बारे में देखते हैं क्या सीन है. अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हंगर स्टोन्स के बारे में पढ़ा था, हंगर स्टोन्स, क्योंकि क्या हुआ है कि वहाँ पे पानी का जो लेवल है नदियों में वो काफ़ी नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कुछ स्टोन्स है वो दिख रहे थे. अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं देखा हमारा लास्ट वीडियो, तो आप ज़रूर हमारे पेज इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, उसमें आपको हंगर स्टोन्स के बारे में पता चल जाएगा. वो भी इसी से रिलेटेड है. तो देखते हैं हम इसको. इसमें है कि इट सेज दिस टॉपिक इज कि पिछले 500 साल में यूरोप में सबसे बड़ा सुखाड़ है. अभी 2022 का जो ड्राउट है वो 500 साल में सबसे बड़ा है, ठीक है. लार्ज रिवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू शैलो स्ट्रीम्स हीटिंग पावर जनरेशन, क्योंकि अब अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे है और नदियाँ ही सूख जाए तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से कैसे बनेगा, क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पानी चाहिए, तो पावर सप्लाई भी वहाँ पे कम है. ऊपर से यूक्रेन क्राइसिस की वजह से आप देख रहे हैं कि रशिया ने यूरोप को गैस देने से मना कर दिया है, तो वैसे ही यूरोप में वो पावर की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है. तो ऑल दिस थिंग्स आर कंबाइंड, और उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो यूरोप को काफ़ी परेशानी कर रहा है. अभी मैंने एक ट्विटर पे एक इंटरव्यू देखा बोरिस जॉनसन का, जिसमें बोरिस जॉनसन अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि आप एक नया कैटल खरीद लो, जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आधे हो जाएंगे, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप की क्या हालत है, और यूके एंड अदर जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़ उनकी क्या हालत है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, ठीक है. और इंडिया ने वैसे ही यूके को पीछे कर दिया है. यूके जो है वो 6th नंबर का इकोनॉमी बन चुका है और इंडिया इज़ एट द 5th प्लेस.
तो इंडिया ने यूके को, जो हमारे कॉलोनाइजर थे ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, फॉर 200 ईयर्स, उनको हमने 75 ईयर्स 1947 में यूके यहाँ से गया लौट के, और इन 75 ईयर्स हमने उनको पीछे कर दिया इकोनॉमी में. सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पे. सो दिस ड्रॉट इज कंसीडर्ड द वर्स्ट इन 500 ईयर्स. 500 साल में ये सबसे बड़ा जो सूखा है यूरोप का. ठीक है ना. उसके बाद जो लास्ट सबसे जो भयानक था वो 1540 में था, जिसमें था हज़ारों लोग मारे गए थे. उसके बाद 2003, 10 और 2018 में भी आए, पर वो सब इतने बड़े नहीं थे जितना कि अभी वाला है. यूरोप की जो बिगेस्ट रिवर्स हैं लाइक राइन, पो, लोरी, डानूब, ये सारे सूख चुके हैं ऑलमोस्ट. ठीक है ना. उनके जो पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है. उसमें मिड साइज बोट्स भी नहीं चल पा रही हैं, इतना कम पानी है नदियों के अंदर. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूरोप में कह रहे हैं कि अबाउट 64% ऑफ कंटिनेंट, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का जो 64% लैंड मास है वो वाटर क्राइसिस एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब ज़मीन में पानी बहुत कम है. ठीक है. उसके बाद 90% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अबाउट 83% ऑफ जर्मनी, क्लोज टू 75% ऑफ इटली आर फेसिंग एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स, क्योंकि ऑब्वियसली पानी नहीं है तो खेती कैसे होगी. सो ये सारी कंडीशन है यूरोप के अंदर. ठीक है. रीज़न क्या है, कॉज क्या है उसका, कि इतनी भयानक जो सूखा है वो क्यों हो रहा है. सो ड्रॉट्स आर द पार्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम एंड आर नॉट अनकॉमन इन यूरोप. ये कहीं भी अनकॉमन नहीं, क्योंकि ड्रॉट्स जो है वो एक क्लाइमेट साइकिल होता है कि कभी सूखा आता है तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. जैसे पाकिस्तान जो है वो डूब गया है, पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट डूबा हुआ है, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पे, पानी निकल ही नहीं पा रहा है और वहाँ पे बाढ़ है हर जगह. पूरा पाकिस्तान डूब रहा है और पूरे यूरोप में अभी सूखा चल रहा है. तो ये एक सीन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. तो ये क्लाइमेट ऐसे ही है. क्लाइमेट में आप देख सकते हैं कि कहीं पे सूखा होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है. तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स इसका एक रीज़न है, एंड यूजुअली हाई टेम्परेचर ऑब्वियसली, क्योंकि हीट वेव्स. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि देखिए 2018 जो लेटेस्ट सूखा था, जो लेटेस्ट ड्राउट था वो 2018 में था. ठीक है. और अभी 2022 है. तो दिस 4 ईयर्स जो इसका इफेक्ट है वो कम नहीं हुआ, और 4 साल के अंदर फिर से एक ड्राउट आ गया है. तो जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट इस बार का बहुत ज़्यादा हो रहा है. इतना फ्रीक्वेंट अगर ड्राउट होगा तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा. और आप देख सकते हैं कि क्वाइट फ्रीक्वेंट, जैसे 3 में, 10 में, ये तो 7 ईयर्स का गैप है, यहाँ पे 8 ईयर्स का गैप है. लेकिन अगेन अभी जो हुआ है 2022 में, ये सिर्फ 4 ईयर्स का गैप है. तो अर्थ को जो वहाँ पे लैंड मास है उसको रीस्टोर करने के लिए अपने आप को टाइम चाहिए होता है, वो इमीडिएटली नहीं होता. और इतने फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आएंगे तो फिर अगर अगली बार अगर सपोज 2 साल के अंदर अगर अभी जितनी इंटेंसिटी है उसके आधा भी अगर हीट वेव आ जाए तो अभी से ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है यूरोप की अगर ऐसा ही चला तो. ठीक है. तो सॉइल मॉइस्चर वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो खेती नहीं हो सकती, और नदियाँ सूख चुकी हैं. आप जस्ट अभी हमने देखा है. अदर और कहाँ पे एक सूखा चल रहा है तो वो यूएस और चाइना में भी है. ठीक है. तो हम देखते हैं कि इनकी क्या हालत है यहाँ पे. तो चाइना में कंट्रीज द लॉन्गेस्ट रिवर जो यांगजी, उसका सबसे बड़ी नदी है उनकी, वो ऑलमोस्ट थर्ड जो है उसका वो नहीं सॉरी विच केटर्स टू अबाउट थर्ड ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज सीइंग वाटर लेवल्स ड्रॉप टू रिकॉर्ड लो. मतलब वहाँ पे भी पानी काफ़ी कम हो चुका है उसके अंदर. देन पोयांग एंड डोंगटिंग, वो भी काफ़ी कम हो चुका है उसके अंदर भी पानी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है चाइना के अंदर. और चाइना का जो ये पानी सूख चुकी है और जो वहाँ पे ड्राई स्पेल हुए हैं, जिसकी वजह से उनके ऑटम जो प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो 75% ऑफ प्रोडक्शन उसके ऑटम एग्रीकल्चर से आता है. और अगर ये ऑटम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अभी जिस टाइम पे वहाँ पे सूखा है उसकी वजह से जो ऑटम टाइम पे, ऑटम एक्चुअली किस महीने में होती है इंग्लिश की, आई डो नॉट रिमेंबर, पर अगर हम यहाँ से देखें तो ऑटम में जो उनका जो एग्रीकल्चर होने वाली थी वो काफ़ी इम्पैक्टेड है, और 75% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनके ऑटम के एग्रीकल्चर से आती है. दैट्स वाई चाइना में जो सुखाड़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है. यूएस में भी अगेन 40% ऑफ द एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज अंडर ड्रॉट कंडीशन फेसिंग अबाउट अफेक्टिंग 130 मिलियन पीपल. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस, यूरोप, चाइना, ये सब कुछ काफ़ी अंदर स्ट्रेस में है.
और इंडिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। वैसे इंडिया में भी इस साल पानी की जो कि है ड्रॉट जैसा कंडीशन तो नहीं है, पर बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में पानी इस बार जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी ऐसा इम्पैक्ट तो है, पर उस लेवल पर नहीं है जैसा यूरोप और चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज निश्चय पोषण योजना। ये जो है टीबी से रिलेटेड है, और सॉरी ये अलग यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। गवर्नमेंट का जो प्लान है वो टीबी खत्म होना चाहिए बाय 2025 आई थिंक। ये ना बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। एक्चुअली इसको एडिट करने के चक्कर में काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हम इसको ऐसे ही मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ओके फाइन। सो द टीबी के बारे में देखिए, सबसे पहले ये जो निश्चय पोषण योजना है वो टीबी के बारे में यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है। ट्यूबरक्लोसिस दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। हमने जो टोमेटो फ्लू देखा था वो एक वायरस की वजह से होता है, चिकनगुनिया एक वायरस की वजह से होता है, और टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, वो भी उसका जो बैक्टीरिया होता है वो भी उसी फैमिली से आता है जिससे टीबी वाला बैक्टीरिया आता है। तो यानी टीबी और लेप्रोसी क्वाइट क्लोज है, मतलब रिलेटिव्स हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसे अगर समझना चाहें तो। टीबी इज़ ए वेरी एंशियंट डिजीज़। ये काफ़ी 3000 BC में भी, यानी कि 5000 साल पहले भी टीबी था हमारे पास। व्हाट इज़ निश्चय पोषण योजना? इसके अंदर क्या है कि हर जो मतलब पर्सन इन्फेक्टेड है टीबी बैक्टीरिया से, उसको 500 रुपये थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT 500 रुपये उनको हर महीने दिया जाएगा खाने पीने के लिए। एक्चुअली टीबी में क्या होता है कि मैंने देखा है गांव में, कई लोगों को गांव में हो जाता था टीबी, तो उनको ये रहता था कि इम्यूनिटी, मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपको अंदर से काफ़ी खाता है, तो आपको भी खाते रहना है ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, है ना, कि उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जैसे जो नॉनवेज लोग होते थे वो काफ़ी वो बकरे की टांग खाते थे, क्योंकि बकरे की टांग में काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि वो टीबी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ऐसे उनको खाना पीना काफ़ी अच्छा हेल्दी रखना पड़ता है, तो टीबी नहीं होगा आपको और आप निकल जाएंगे, और दवाइयाँ तो ऑब्वियसली खानी होंगी। तो 500 पर मंथ ये निश्चय पोषण योजना में उन पेशेंट्स को दिया जाएगा, राइट। टीबी का स्टेट क्या है इंडिया में वाई इज द मैटर ऑफ कंसर्न? क्योंकि हुआ क्या है कि 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 में 19% टीबी के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, कम होने चाहिए थे जबकि बढ़ गए। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस स्कीम, और इसके अंदर कुछ 5 लाख के पास लोगों को बेनिफिट मिलेगा टीबी रिलेटेड डेथ्स। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड टीबी रिलेटेड डेथ्स आर 5 लाख। मतलब एक साल में, ये एक साल का नहीं, विच इज हाँ, एक साल के अंदर 5 लाख लोगों की डेथ हुई है टीबी से। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी भयानक बीमारी है। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, और उसके अंदर 500 रुपये हर पेशेंट को दिया जाएगा, और मेडिसिन तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके अंदर दी जाती हैं। तो यस, इसके साथ ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस सेकंड वीडियो का वो पूरा हो चुका है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले कि स्पेस स्पेशल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी ये क्या है। ठीक है, ये हमने जस्ट अभी इसी वीडियो में देखा है, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। आई विल नॉट डिस्कस दिस कि इसमें क्या है, आप कि इसको आंसर करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड नैनो यूरिया, विच इज़ अगेन विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो आप इसको भी आंसर करें। ठीक है, आप इसको रोक के और इसको देखें कि क्या सही है क्या गलत है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज ड्राउट, अबाउट ड्राउट, सॉरी, तो आप इस क्वेश्चन को भी आंसर करें। ठीक है, गला सूख जाता है, तो आप इसको आंसर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। यू सी, फॉर योर प्रिपरेशन, अगर आप ऐसे करंट सेक्शन की बात करें तो करंट सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और एग्ज़ाम में ये एक्चुअली थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, अराउंड 20 मिनट्स के पास के वीडियो होते हैं हर वीक का। तो दिस वीडियो इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। वाई? बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड मुझे जो लगता है कि जो टॉपिक्स मैं अपने लिए करूँ कवर, वही मैं यहाँ पे लाता हूँ, और मिनिमम टॉपिक्स लाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होंगे ही होंगे,
इससे तो क्वेश्चन आने ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चांस हैं जब आने के, तो ही मैं उनको कवर करता हूँ। और एक दो टॉपिक थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, पर इसमें से ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उनके। तो आप इनको रिलीजियसली फॉलो करें और इसको आंसर करें जो क्वेश्चंस होते हैं। नोट्स बना ले चाहे तो, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और डेली वीडियो देखने से, डेली करंट अफेयर्स को देखने से अच्छा होगा कि आप ऐसे इसको देख ले, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। और आप चाहे तो जो न्यूज़ होती है वीकली या फिर जो करंट न्यूज़ चल रही है, आप उसको अलग से फॉलो कर सकते हैं। कुछ थीम बेस्ड न्यूज़ होती हैं, टॉपिक्स होती है जिसको हम कवर नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही टॉपिक हो जाएगा करीब आधे एक घंटे का, उस पर डिस्कशन करना। तो वैसा टॉपिक हमने छोड़ा हुआ है, पर वैसे टॉपिक्स बहुत कम होते हैं, लाइक मंथ में एक होते हैं, दो होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे अभी फ्रीबीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की फ्रीबीज जो है वो अलाउ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उससे क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और गुड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये सारे टॉपिक्स अभी चल रही हैं, ठीक है, न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। देन जियोपॉलिटिक्स है कि चाइना यूएस इंडिया रिलेशनशिप, देन 5G है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लंबे जो काफ़ी टाइम लेंगे, एक टॉपिक ही आधे एक घंटे का वीडियो बनेगा सिर्फ एक टॉपिक पे, तो उनको आप अलग से कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप यहाँ पे इस वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हैं, एंड दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर पीपल। सो कीप स्टडिंग और अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।